Good morning, everyone. So today we are going to start with the second unit of environmental studies. Second unit is basically talking about water resources. So in a, in our first unit we have covered what is environmental studies. Okay, what is the components of environment? We have studied atmosphere, different layers of atmosphere. Okay, we have also studied why environment is called as a multidisciplinary approach because it studies various other subjects along with environment which affects the environment. That's why environment is known as multidisciplinary approach. So today we are going to start with water resources. Okay. Now, water is one of the most vital resources. This thing we are learning right from our school times. Okay, nothing new, and we have experienced one day also without water we cannot survive. Okay, so we need water for various purposes. Although water is a renewable resources means we can renew it. Okay, it can be renewed over the time through the hydrogen cycle or through the water cycle which we know as. But only the fresh water that is available for our consumption, for our drinking, is very less in this world. Okay, so 97% of the water we have is salty water which we cannot consume or which we cannot we don't even can't even use for our household chores. Okay, we need water for various purposes such as to grow food. In agriculture we need water to for cleaning purpose, to generate electricity. Okay, and most importantly to stay alive we need water. Coming to types of water, about the word resources. Resources in simple terms means from where we get that thing. Okay, so first we have salt water resources. Okay, the plan the planet's atmosphere is covered in salt water. However, when it relates to potable water resources, salt water is actually ineffective. Okay, so salt water is of no use to us unless only for the purpose of beaches and going at the beaches. Salt water has no other use for us. So apart from spectacular ocean views, there have been saltwater opportunities through which human beings can gain profit. Okay. Next is groundwater. Okay, salt water is the water we get from seas and oceans, but that water is of no use to us. Okay, next is groundwater, the water which we extract from ground by digging wells and all. Okay, that is our groundwater resources. So groundwater is the water natural resources. Okay, it is naturally in the ground. When you dig the ground, you get water from it. Okay, part of the water filters down into the soil via layers of dirt, clay, and rock. Okay, this water. Okay, third is surface water resources. Surface water which we get on the surface. Surface is what the uppermost layer of the earth. Okay, so the water which we find in lakes and rivers is our surface water. Okay, so this water can be used for industry, agriculture, transportation, livestock, hydroelectric energy. So these are the uses of surface water. Now, this surface water is not salty like the water which we find in seas and oceans. So surface water is a fresh water reservoirs you can consider, and it can be used for many purposes. Okay. So next concept we are going to discuss. See, whoever have joined late, now we have started with the second unit of EVS. So our second unit is basically talking about water resources. Okay, we have covered what is water resources. We have covered different type of water. One water we get from seas and oceans. So that is the
maximum percentage of water on the globe. We have 97% of the water we are getting from seas and oceans, which is salty water, which is of no use to us. Then we have groundwater, the water which we dig in the ground and we get. Okay, when you dig well and all, you get water from ground. Okay, natural resource of water. And third is the surface water. Okay, now moving to the next concept of hydrological cycle. About water cycle. Okay, the both the meaning are same. So it starts with evaporation. You can see here water getting evaporated. Okay, evaporation we all know when water forms bubbles and it goes up. Okay, then evaporation, then we have transpiration, condensation, precipitation. We'll study all these concepts. The hydrological cycle involves the continuous circulation of water in the earth atmosphere. Okay, so on our earth, whatever water we has that evaporate in the form of bubble, that evaporate in the form of vapor, it goes into in our atmosphere, it gets condensed in our atmosphere, then again it form clouds and it come down in the form of rain. Okay, so the water moving from our earth to atmosphere, again from atmosphere to earth, in a cyclic form. You can see in a cyclic form the water is moving. Okay, so it is starting from the earth. Evaporation process starts from the earth, then it goes into the atmosphere. Okay, so through the process of transpiration, condensation, it forms clouds over there. Okay, then from clouds again we get rain, and again that water is coming on the earth. So you can see in a cyclical manner the water is moving from earth to atmosphere, again from atmosphere to earth. Okay, so this process of water moving from earth to atmosphere again to earth, that is known as hydrological cycle or water cycle. So the water cycle is the motion of the water from the ground to the atmosphere and back again. Okay, so from ground to atmosphere and then back again. One of the many processes involved in hydrological cycle. Okay, the most important are evaporation. Okay, transpiration, condensation, precipitation, and runoff. Now we'll study the various sources, stages of water cycle. Okay, so evaporation, the sun is the ultimate source of energy and it powers most of the evaporation that occurs on the earth. Okay, see, evaporation is nothing but at in our home also when we boil water, you can see the quantity of water getting reduced as and when you give more of heat to the water. ठीक है, तो वो क्वांटिटी जो भी वेसल में आप पानी बॉईल कर रहे हो तो क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स रिड्यूस्ड. तो वो पानी कहाँ जा रहा है, वो पानी भाप बन के ऊपर, अगर आपने कोई ढक्कन लगाया तो आप उस पर देखोगे वो वहां जमा हो जाता है, या इट इवोपरेट्स इन द एयर. तो जैसे हमारे किचन में ये सिस्टम काम कर रहा है कि आप जितना ज्यादा हीट दोगे बॉइलिंग वाटर को उतना आपका पानी कम होते जाएगा. वैसे ही यहाँ पे ये चीज काम कर रही है. सन की जितनी ज्यादा हीट ओशियन सर्फेसिस को मिलती है, वाटर भाप बन के एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, वो भाप को हम बोलते हैं इवोपरेशन. Okay, so evaporation generally happens when water molecules at the surface of the water bodies. So our water bodies can be जहां जहां वाटर है वो वाटर बॉडी हो गई. ठीक है, they become excited and rise into the air. So water molecules, due to the heat of the sun, they rise in the atmosphere. So the first stage in water cycle is evaporation, where water is getting evaporated, means वो भाप बन के एटमॉस्फेयर में मिल रहा है. Okay, next stage is transpiration. Sublimation occurs when snow or ice changes directly into water vapor without becoming water. Okay, so sublimation or transpiration both are one and the same thing. Okay, so this occurs when the water directly, sorry, when snow or ice changes directly into water vapor. ठीक है, हमने यहाँ पे भी क्या देखा, evaporation में भी क्या हो रहा है, ड्यू टू हीट ऑफ द सन द वाटर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. ओके, सो सब्लिमेशन में जो दूसरी वाटर रिजर्वर्स है, स्नोफॉल होती है, स्नो के माउंटेन्स है या आइस है, दैट
that is directly converting into water vapor without becoming water. Okay, it usually occurs as a result of dry winds or low humidity. Okay, sublimation can be observed on mountain peaks where the air pressure is quite low. Okay, so where air pressure is low, you have less of oxygen, your ice gets melt and directly evaporates in water. Okay, next is condensation, the water vapor that gets accumulated in the atmosphere. Okay, so we have seen in the previous two steps, first step में भी second step में भी क्या हो रहा था, जो भी अर्थ पे पानी है वो जाके भाप बन के एटमॉस्फेयर में जमा हो रहा है. ठीक है, अब ये जो जमा हुआ पानी है, थर्ड स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होगा कंडेंसेशन. द वाटर वेपर accumulated in the atmosphere eventually cools down due to the low temperatures found at high altitude. Okay, these vapors become tiny droplets of water and ice and eventually come together to form clouds. Okay, so now these water vapors that are traveling in the atmosphere, as they go high in the atmosphere, वहां पे temperature कम हो जाएगा. ठीक है, वहां पे start होगा the process of condensation. Okay, so condensation का एक simple example आप ये ग्लास देख सकते हो. ठीक है, जितना आप ग्लास को ठंडा करते हो, टेम्परेचर लो करते हो, आप फ्रिज में रखते हो कांच का ग्लास, यू कैन सी यहाँ पे सब वाटर वेपर्स जमा हो जाते हैं. वैसे ही एटमॉस्फेयर में होता है. ओके, सो नाउ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गेट एक्यूमुलेटेड, वहां पे जमा हो जाते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो गया, ठंडी बढ़ गई ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो वाटर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होके एक क्लाउड बना देंगे. ठीक है, नाउ last step is precipitation is the last step. Up ye clouds will again above degrees centigrade, the vapors will condense into water droplets. However, it cannot condense without dust or other impurities. Hence, water vapors attach itself to the particle surface. Okay, so when you have enough droplets, okay, जब clouds बढ़ जाते हैं, when you have enough droplets coming together, now these droplets will come down on the earth again in the form of rain, in the form of snow, sleet, hail. Okay, these are different types through which again the earth is getting water from atmosphere. Okay, so in short, you can write in your own words. There is no need of using any technical language. Okay, जो भी आपने समझा है, ये साइकिल को आप अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, द साइकिल इज वेरी इजी. ओके, सो it starts with evaporation. Due to the heat of the sun, the water gets evaporated. So water is not getting evaporated only from these water bodies, but जो आइस है या जो माउंटेन्स पे आइस है या जो ट्रीज पे पानी है, वो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से evaporate हो रहा है. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन एंड evaporation दो प्रोसेस है जिससे अर्थ का पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है. वहां पे वो पानी के मॉलिक्यूल्स जमा होके क्लाउड बना रहे हैं. ठीक है, ये आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं बने हुए. then when these clouds get bigger and bigger, they, due to some process, now these clouds give water again, ठीक है, to the earth. That process is known as precipitation. After precipitation, when this cloud surface runoff, ठीक है, तो जो surface runoff मतलब जो भी पानी हमारे अर्थ को मिल रहा है, ओके, वो पानी कहीं ना कहीं जाके जमा हो रहा है. अगर डैम्स बने हुए हैं, डैम्स में जमा हो रहा है, लेक्स, रिवर्स, सीज. ठीक है, तो वो पानी ऐसे जो भी बारिश का पानी है, वो कहीं ना कोई वाटर बॉडी में जाके जमा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ. ओके, then from surface runoff, again the process of evaporation will start. Okay, now coming to availability of water. Water availability is the quantity of water that can be used for human purposes without significant harm to ecosystem or other users. Okay, so water available तो बहुत है. अगर आप globe देखोगे, our globe is mostly blue in color. That means it is covered with so much of water कि उसका color ही blue दिखता है जब आप ऊपर से कोई सैटेलाइट से ग्लोब का इमेज लोगे. बट दैट वाटर इज नॉट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन.
Okay, so availability of water is the quantity of water that can be used for human purposes. जो humans water use कर सकते हैं, that is known as availability of water. So approximately 71% of the earth is covered by water. Okay. And this water can be divided into underground water, surface water. Okay. So surface water, as I just told you, the water that is found on the surface in the form of lakes and rivers. Okay. So surface water includes water from oceans, lakes, rivers, ice tops, and glaciers. Okay. Among these freshwater reservoirs are water falling from the sky that we can use. Okay, लेक्स रिवर स्ट्रीम्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. ओके, तो जो पानी हमें बारिश से मिल रहा है, ठीक है, या लेक से, रिवर से, ठीक है, स्ट्रीम्स इज अगेन द वाटरफॉल्स एंड अंडरग्राउंड वाटर. दिस इज द ओनली वाटर दैट इज गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओके, सो the oceans and the sea water is not for human consumption. सो जो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, वो 71% का 91% इज हेल्ड बाय ओशियंस. ओके, विच इज सॉल्टी वाटर. आइस में इट इज हेल्ड बाय 2.06%. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, ग्राउंड वाटर इज 0.9%. So 97% we have seen is in C. Then 97 के बाद कितना बचा? 3%. वो 3% में से 2% is stored in the 2.6% is stored in the form of ice. Okay. In groundwater we have 0.9%. In lakes we have 0.008%. Okay. Lakes are formed either by accumulation of snow or by seeping of the groundwater surface on the earth. Wetlands. Okay, wetlands are formed in the area where water covers the soil for a longer period of time. Okay, wetland is where you see there is marshy land कि वहाँ हमेशा जमीन गीली रहती है, ठीक है. तो near oceans and seas, in that we have 0.001% of the water. Okay, so this is the availability of water resources on the earth. 97% is by oceans, which we human beings cannot use. Okay, so this is the remaining 3% that is divided and that is good for our consumption. Okay, so you can see for our consumption, we already have so little of water that is only 3% is left for human consumption. Okay, that's why right from our school days, we have been taught that we don't need to waste water. Okay, so there are so many campaigns going on, so many awareness videos we can see on YouTube where they are showing us the importance of water. There are people like people are suffering scarcity of water so badly in some areas. Okay, so wherever there is water, there are being people are being taught that not to waste water. ठीक है, क्योंकि ये 3% भी कब तक चलेगा, no one knows. There is water cycle जिसके through continuous पानी आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बट दिस वाटर साइकिल इज ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ वी ह्यूमन बींग्स. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर साइकिल में भी इफेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो आप कभी देखोगे इन रेनी सीजन वी डोंट गेट रेन्स एंड without rainy season we are getting rains which is again destroying our crops. Okay, तो global warming की वजह से there are seasonal changes, our water cycle is also affected. Now, factors affecting the water quality. The geology of a stream, what the bottom or substrate of the stream is formed from. Okay, stream is nothing but the flowing water. ठीक है, तो जो झरनों से पानी आता है, वो झरनों की जो जमीन है, ठीक है, जहां से वो पानी एक्चुअली निकल रहा है, ठीक है, तो वो जमीन की क्वालिटी कैसी है, दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर. The surrounding land, soil type, and activities carried out on the land will affect the quality of the water. अब वो if there is some lake and sea, ठीक है, एक लेक है या रिवर है, सो लेक एंड रिवर में तो फ्रेश वाटर होता है, सॉल्टी वाटर नहीं होता है, बट उसके सराउंडिंग में यू हैव मैनी फैक्ट्रीज. अब वो फैक्ट्रीज अपना वेस्ट वो रिवर में रिलीज करती है, ठीक है, तो अगेन द वाटर फ्रॉम रिवर इज नॉट गुड फॉर अवर कंजम्पशन.
Okay, in our city also we have one one river flowing, but that river is so dirty you cannot even look at it. ठीक है, रिवर में तो वैसे फ्रेश वाटर होता है, बट वो रिवर की कंडीशन इतनी खराब है कि आप देख भी नहीं सकते हो, पूरा कचरे से भरा हुआ है वो। क्यों? क्योंकि आजू बाजू बहुत फैक्ट्रीज है जो अपना वेस्ट वो रिवर में रिलीज करती है, एंड दे आर स्पॉइलिंग द क्वालिटी ऑफ द वाटर। ओके, so the quality of water will depend upon the soil that is covering the soil type found in that land, okay, and the surrounding activities that are being carried on. Okay, now coming to next topic, waterborne diseases। ठीक है, पानी के कारण कौन कौन सी डिजीजेस होती है उसको हम बोलते हैं waterborne diseases। कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर मीन्स खराब पानी जिसमें कुछ बैक्टीरिया चले गए हैं, ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर कंजम्पशन। तो जब आप contaminated water or food after coming in contact with the person who has it or with the bacteria itself can lead to infection, okay, thereby having waterborne diseases. Whenever you consume contaminated water, the bacteria present in it will act in your body and you will suffer some diseases that are because of water. These diseases would not exist if everyone in the surrounding was able to practice proper sanitation, hygiene and had access to clean water। ठीक है, तो ये diseases सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से हो रही है। अगर हमारे पास साफ पानी होता, people have taken precaution not to spoil water, okay, people would have taken precaution not to contaminate water, then we would never have faced these diseases। Okay, so what are the diseases that are because of water? The first and most common diseases, many of us may have suffered from disease which is known as typhoid fever। Okay, so typhoid fever is an infection that spreads through food। ठीक है, बाहर का खाना खा लिया जिसमें उन्होंने फ्रेश पानी यूज नहीं किया था। ठीक है, ना सिर्फ पानी पीने से आप बीमार होते हो, बट वो पानी कुछ खाना बनाने में भी यूज हुआ है। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया वो खाने में भी चले जाएंगे। ओके, so typhoid fever is an infection that spreads through food that is contaminated and unhygienic water। So typhoid का यही दो रीजन है, या आपने ऐसा कोई खाना खा लिया जिसमें फ्रेश पानी नहीं यूज किया गया था, या अनहाइजीनिक पानी पी लिया आपने। ओके, सो दीज आर द मेन रीजंस फॉर टाइफाइड फीवर। Cholera is the bacterial disease that is commonly found in rural villages, okay, where there is no proper sanitation। Okay, जहाँ sanitation hygiene का ख्याल नहीं रखा जाता है, there you find in rural areas mostly cholera kind of disease is spreading। Okay, so cholera is a disease that spreads through water and can be fatal if it is not treated on time। Fatal means जिससे हमारी जान जा सकती है। ओके, सो अगर प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हुई, ट्रीट नहीं हुई, इट कैन बी फेटल ऑल्सो। Hepatitis A, okay, it is again a type of liver infection which is caused because of contaminated water or food। Dysentery is an intestinal infection। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन पे वो बैक्टीरिया अटैक करता है। इट इज caused by inflammation and body diarrhea। So you get diarrhea, you get body inflammation। Body inflammation is like a kind of burning you feel in your body। Okay, fluoride problems in drinking water। So fluoride is what it comes from fluorine, which is a common natural abundant element। Okay, see fluoride is one kind of substance that is added by most of the municipal। हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? म्युनिसिपालिटी से। ठीक है, तो कभी कभी आप फील करोगे महीने में एक दो बार पानी की टेस्ट कुछ अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे हमारे घर वाले कहते हैं कि म्युनिसिपालिटी इसमें कोई केमिकल डालती है फॉर क्लीनिंग द वाटर। ओके, सो वो केमिकल क्या है? फ्लोराइड।
ओके, सो फ्लोराइड अगर एक्सेस में भी डालेंगे वो लोग तो इट कॉजेज सम प्रॉब्लम्स टू अस. ओके, दैट इज फॉर क्लीनिंग द वाटर रिजर्वर्स और दैट इज फॉर क्लीनिंग द pipes through which water is coming at our homes. So fluoride contains from fluorine, which is a common and natural abundant element. Adding fluoride to water supply reduces the incidence of tooth decay. Fluoride protects teeth. Okay, too much of fluoride can lead to dental fluorosis, so can which can damage bones and joints. So fluoride is good for our teeth, but too much of it can damage our bones and joints. Okay, now coming to problems associated with water resources. Okay, so we have learned we have different types of water resources. Now first problem we have is water scarcity. We have all now seen that only 3% of water is available for human consumption. Okay, so water is already scarce, and out of that 3%, we human beings are also contributing to spoiling the water. ठीक है, जो fresh water है वहाँ पे factory waste या industrial waste release करते हैं. We are not maintaining that fresh water. Okay, floods and droughts. Recurrent summer droughts is what सूखा पड़ जाना. ठीक है, coinciding with the peak demand periods for agriculture. ठीक है, जब पानी की कमी होती है we face droughts means सूखा. तो वो सूखे के कारण we cannot do proper agriculture. ठीक है, tourism नहीं होगी वो जगह पे, agriculture नहीं होगा. ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी. ओके, तो आप देखोगे कई कई ग्राउंड वाटर इज जो हम कुएं से पानी निकालते हैं. ठीक है, कोई कोई कुएं का पानी भी बहुत खारा निकलता है, खारा इन द सेंस सॉल्टी. ठीक है, तो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी जो हमें ग्राउंड वाटर से पानी मिल रहा है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल अवेलेबल इन दैट ग्राउंड. ठीक है, कहीं कहीं से आपको मीठा पानी मिलेगा बट मेनी प्लेसेस यू फाइंड the groundwater is also salty, which is again not good for human consumption. Okay, watershed degradation. So degradation is spoiling the quality of the water. Okay, the quality is spoiled because of floods coming. जब floods आते हैं, so you have everything mixed with the water. ठीक है, जो भी soil है that is mixed with the water. Coastal interaction when our water bodies interact with, अगर नदी का पानी सी में मिल गया तो वो भी खारा बन जाएगा. ठीक है, so and that water is again not good for our consumption. Okay, so now moving to next type of resources, that is forest resources. Okay, so we have covered water resources. Forests are the main source of many commercial products such as wood, timber, pulpwood. Okay, about 1.5 billion people depend on fuel wood as energy resources. Okay, so forests can provide us with food, fiber, edible oils. Drugs means the medicines. Okay, forest lands are also used for agriculture and grazing purpose. Grazing means people take their animals for forest for in forest for feeding. That is known as grazing. Ecological uses of forest. Okay, what do you mean by the word ecological? Ecological is maintaining balance of our ecosystem. Okay, so forests are habitat to all wild animals. Habitat is place of living. जैसे human beings can live either in cities, villages. We cannot go and live in forest. ठीक है, तो forest हमारी रहने की जगह नहीं है. Habitat is where you can survive. ठीक है, आप forest में रह तो सकते हो बट आप survive नहीं कर सकते हो वहां ज्यादा दिन. वन कि वहां पे आपके लिए रिसोर्सेस नहीं है. ठीक है, यू डोंट हैव रिसोर्सेज इन फॉरेस्ट, तो एज ह्यूमन बीइंग आप फॉरेस्ट में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे. वैसे ही एनिमल सिटी में शहरों में सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सबकी एक अपनी रहने की जगह है जहां हम सरवाइव कर पाते हैं. So forests are habitat to wild animals, plants, and support million of species. There are so many different kind of you can say insects, reptiles, animals that are living in forest. It is a place of dwelling and living and surviving for those species. They help in reducing global warming. Okay, so global warming का main cause क्या है? Last lecture में हमने पढ़ा था layers of atmosphere. ठीक है,
जब थर्ड लेयर हमने पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास एक नेट के जैसा एक है जो यूवी रेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सन की यूवी रेस को डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आने देता है, वो उसको फिल्टर करके भेजता है। अब अगर वो नेट में अभी होल्स हो गए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड मेनी ऑफ द यूवी रेस आर कमिंग डायरेक्टली ऑन द अर्थ एंड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एज द नेम सजेस्ट, हमारा ग्लोब वार्म हो रहा है, ठीक है। क्यों वार्म हो रहा है? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन इफेक्ट था स्ट्रेटोस्फेयर में वो पोल्यूशन की वजह से खराब हो रहा है, ठीक है। यूवी रेस फिल्टर नहीं हो रही है और डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, डायरेक्ट ग्लोब पे आ रही है, जिसके कारण हमारा ग्लोब वार्म हो रहा है, ठीक है। नाउ हाउ विल फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग? वी ऑल नो फॉरेस्ट ठंडक पहुंचाते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन, दे एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, okay. So they are absorbing the harmful chemicals and they release oxygen which can reduce the global warming effects. Forest can act as a pollution purifier, okay, by absorbing toxic gases, not only carbon dioxide but they do absorb many other toxic gases also. Forest not only help in soil conservation means soil को बचा के रखना, ठीक है, but also helps in regulating the hydrological cycle. Okay, now coming to the concept of deforestation. ठीक, deforestation इस जब हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक है, पेड़ है, फॉरेस्ट जंगल है, उसको हम फॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज व्हाट कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, ओके। नाउ वी कट डाउन फॉरेस्ट फॉर वेरियस रीजंस, दैट इज नोन एज deforestation. Deforestation can be defined as the large scale removal of trees from forests. ठीक है, not one or two trees, but when you remove so many trees from the forest, that is known as deforestation. For the facilitation of human activities, ठीक है। तो आप डिफोरेस्टेशन क्यों करते हो? either you have to build some factories there, either you have to come up with some residential project over there, आपको वहाँ buildings बनानी है रहने के लिए या फैक्ट्रीज डालनी है, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जब आप फॉरेस्ट को काटते हो, दैट कंसेप्ट इज नोन एज डिफोरेस्टेशन. It is a serious environmental concern since it can result in the loss of biodiversity. Okay, we'll study the concept of biodiversity in our coming lectures. Okay, biodiversity means in short अलग अलग टाइप की स्पीसीज जब हमारे एनवायरमेंट में हम देखते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट में वी हैव ह्यूमन बींग्स, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव ट्रीज, वी हैव एनिमल्स, ठीक है। तो अलग अलग तरह की स्पीसीज जब ये एनवायरमेंट में है, दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. नाउ व्हेन यू कट डाउन ट्रीज यू आर इफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी, आप ट्रीज की पॉपुलेशन कम कर रहे हो, ओके। डैमेज टू नेचुरल हैबिटेट्स, ये in our previous slide we have seen that forest is a place of living for so many animals, okay. We are spoiling their habitats, disturbance in water cycle and soil erosion, okay. Soil erosion is what, okay, that soil which is found in forest, okay, it is actually feasible to grow trees, to grow agriculture there, ठीक है। अब जब आप फॉरेस्ट कट करोगे वो सॉइल वहां पे इरोड हो जाएगा, ठीक है। वो सॉइल दूसरे ग्राउंड सॉइल से मिल जाएगा एंड इट इज नाउ इनफर्टाइल. आप फिर से वहां पे फॉरेस्ट नहीं कर सकते हो, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो. Deforestation is a contributor to climatic change and global warming. Okay, so these are the problems associated with deforestation. Causes of deforestation: agriculture, small scale, large scale farming. Okay, many a time we cut down trees because of agriculture purpose. Logging, trees cutting of trees for use of raw materials, ठीक है। तो आपको जो भी रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं फॉरेस्ट से, वो पर्पस के लिए आप ट्रीज कट कर रहे हो, वुड, टिम्बर, ओके, ये सब के लिए. Mining and urban expansion. Mining is what, when you dig the earth to find natural resources from earth, that is mining activities. Urban expansion, city को expand करने के लिए आपकी city के बॉर्डर पे फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट कट करके आप वहां पे भी बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है. दैट इज नोन एज अर्बन एक्सपांशन.
Clearing of the forest area for the construction of infrastructure. Infrastructure can be anything. It can be buildings, it can be even metros. ठीक है, मुंबई में अभी recently like 2 years back की बात है, there is a forest in मुंबई. ठीक है, जब आप गोरेगांव मलाड के साइड जाओगे मुंबई में एरिया, वहां पे एक फॉरेस्ट आता है बीच में जिसको हम बोलते हैं आर्य कॉलोनी. ठीक है, तो मुंबई में ये एक प्रोजेक्ट पास हुआ कि आर्य कॉलोनी का पूरा फॉरेस्ट हम क्लियर करेंगे और वहां पे मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो बहुत सारे मुंबई के लोग वहां पे स्ट्राइक पे बैठ गए. वो फॉरेस्ट में लिटरली आके सेलिब्रिटीज भी थे उसमें. अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको मिलेंगे फोटोज. Okay, there were many celebrities also who have joined common people and they went on a strike कि हम आपको आर्य कॉलोनी का जो फॉरेस्ट है वो कट नहीं करने देंगे. तो लोगों में अभी अवेयरनेस है कि अगर फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो हमको क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं. ठीक है, because you are studying these things right from your school days, but there are people who are actually implementing these things. उन्होंने गवर्नमेंट से ये मेट्रो का प्लान कैंसिल करवाया और मेट्रो का पूरा रूट चेंज करवा दिया. ठीक है, तो यूट्यूब पे इसके वीडियोस है, आप चाहे तो देख सकते हो कि आर्य कॉलोनी को कैसे मुंबई के लोगों ने बचाया. गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बनाया था कि ये फॉरेस्ट कट करके यहाँ पे मेट्रो की लाइन आएगी. ओके, the data behind the deforestation. Okay, now the forest is covering 31% of the total land surface of the earth. Tropical forest harbor over half of the land based animal and plant species in the world. Okay, so half of the animal and plant species in the world we find in forest. Between the year 2000 and 2012, in these 12 years, 568 million acres of forest have been claimed by deforestation. ठीक है, तो इतने फॉरेस्ट काटे गए हैं, 568 मिलियन एकर्स ऑफ द लैंड के फॉरेस्ट काटे गए हैं इन दीज 12 years. In 2018 itself, okay, we have this tropical forest deforestation. The Amazon rainforest, okay, which is the largest forest in the world, which is the source of 20% of the world oxygen. ठीक है, 20% of the world oxygen Amazon rainforest से आता है. As I told you, this is the largest forest in this world. Okay, loses approximately 1.32 acres of its area every minute due to deforestation. Okay, so this is it for today. You have any doubts? Okay, so we'll wind up this lecture here.